रहीम हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने वी के मेहता के एमसीक्यू नंबर 41 से लेकर एमसीक्यू नंबर 50 तक आज की इस वीडियो में हमने कवर करने। सो दिस इज द डायग्राम। ओके, यहाँ पे आपको रेजिस्टर्स गिवन है, ऑलमोस्ट सारे रेजिस्टर्स हैं एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स। ओके, सो यू नीड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एक्स। सो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे आपका वी स्ट्रॉन्ग ब्रिज है, वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है जो हम वी स्ट्रॉन्ग ब्रिज के लिए अप्लाई करते हैं। सो दीज टू मल्टीप्लिकेशन दीज टू रेजिस्टर विल बी टू मल्टीप्लिकेशन दीज टू रेजिस्टर्स। तो इन दोनों को दिस विल बी 6 प्लस एक्स हो जाएगा। 6 प्लस एक्स टाइम्स आपने उसको इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो दिस इज 1 और वो भी 1 ओम है। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 2 बस दैट विल बी इक्वल टू 6 प्लस सीरीज में तो ये आपका 12 हो जाएगा टाइम्स ये पैरेलल में तो ये आपका 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सही, ये 1 डिवाइड बाई 2 विल कैंसिल बाई दिस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका x की वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस 6। सो योर x वैल्यू विल बी इक्वल टू 6। ओके, सो ऑप्शन 4 will be the correct answer. Okay, next MCQ number 42. So in SL having an EMF of 2.2 volt and internal resistance 0.2 ohm is connected to a circuit comprising an ammeter and a resistance of 4 ohm in series with a combination of two resistance of 0.4 ohm each in parallel. What will be the reading of the ammeter? Okay, so you need to find the reading of the ammeter and the reading of the ammeter will be equal to I. Okay, ये आपका I ही होगा. So in this case we will need to find the value of I. Okay, तो value of I will be equal to V divided by R की equal होगा और आपने इक्विवेलेंट लेना है तो V आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.2 वोल्ट हो जाएगा और डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट आपने फाइंड करना है तो दैट शुड बी इक्वल टू 0.2 ओम। ओके, यहाँ से आ जाओ 0.2 ओम फिर प्लस 4 ओम फिर 0.4 और 0.4 पैरेलल में है तो दिस विल बिकम 0.2 ओम। इसका इक्विवेलेंट आप फाइंड कर लेते हैं, आपके पास 0.2 ओम आ जाएगा बस। सो दिस विल बी इक्वल टू 4.4 ओम। ओके, दिस विल बी योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4.4 ओम। तो दिस विल बी इक्वल टू 1, दिस विल बी इक्वल टू 2। ओके, 1 डिवाइड बाई 2, सो 0.5 इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। द करंट विल बी इक्वल टू 0.5 एम्पियर। So option A will be the correct answer. Okay, next MCQ number 43. Two batteries of different EMF and same internal resistance are connected in series with an external resistance and current is 3 ampere. When polarity of one is reversed, the current is 1 ampere. The ratio of EMF will be equal to, okay. So two batteries हैं हमारे पास, different EMF हैं, okay, and same internal resistance are connected in series with an external resistance and current is 3 ampere. Okay, in this case we have actually we have two batteries. Okay, इस तरह के batteries हैं, उसका external resistance भी है। Okay, like this. So ये connect है external resistance R से। Okay, this is your external resistance R, this is your E1, this is your E2, this is your R, this is your R. Okay, तो इसको इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लो तो ये आपका क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 दैट्स विल बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2 सॉरी IR1 IR प्लस IR, क्योंकि हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दोनों में सेम है तो यहाँ पे प्लस आई कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, नाउ यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो तो इसमें हमारे पास 2 आर आ जाएगा, 2 स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर और करंट कितना है, दैट इज गिवन टू दैट इज 3 एम्पियर। नाउ वी विल नीड टू ऑपोजिट द one battery. Okay, let's suppose this is my positive terminal, this is my negative terminal. So now you will add this. So इस डायरेक्शन में आप चले जाओ तो यहाँ पे आपका this is rising potential, this is dropping potential. So this will be E1 minus E2 हो जाएगा। Internal resistance will remain same, so that will be equal to 2R. External resistance will also remain same, that will be R और 3 हो जाएगा यहाँ पे। So now you will need to find the ratio of the EMFs, like you will need to find the E1 divided by E2. Okay,
So for this we will need to find the value of E1 and the value of E2. अच्छा, यहाँ पे we did some sort of mistake. When the polarity of 1 is reversed, the current will be equal to 1 ampere. So in this case, the current will be equal to 1 ampere. This will be 1 ampere, okay? This will be 1 ampere. So now, what you will do, you will need to add these two equation 1 and 2. If you add these two, so you will get 2E1. That will be equal to 8R plus 4R. So from this, your E1 will be equal to 4R plus 2R. This will be your E1. Now for E2, what you will do, you will need to substitute the value of E2. For E2, you will need to substitute the value of E1 in any of these equations. So let's suppose we are going to put in E1 in this equation. तो यहाँ पे आपका 4R plus 2 capital R minus E2, that will be equal to 2 small r plus capital R. तो यहाँ पे E2 इस साइड पे आ जाएगा, so this will become positive E2, और ये उस साइड पे चल जाए तो this will become 2 small r, और ये इस साइड पे तो this will become capital R. So this is my E2. Now I am going to put the equivalent value over here. E1 is 4R plus 2 capital R divided by this is 2R plus capital R. So now if you take 2 as a common, so this will become 2 small r plus capital R divided by 2R plus capital R. So this will cancel with this, so your answer will be equal to 2. So in this case, the answer will be equal to 2. Part B will be your correct answer. Okay, so number 44. That is 5 resistors are connected as shown in figure 2.3 for the effective resistance between point A and B. So you need to find the effective resistance point A between point A and B. Okay. So यहाँ पे हमारा डेल्टा कनेक्शन इसको हम स्टार में कनेक्ट कर लेते हैं. Like you need to do it like this. But for finding this resistance, you will multiply these two, then divide by addition of all these resistance. So 7 times 2 will be equal to 14, divided by addition of all these resistance, 7 plus 4, that will be equal to 11 plus 2, that will be 13. Similarly, you will do for this resistance 4 times 7, इसके cross 4 resistance है और 7 resistance है. So 4 times 7 is equal to 28, divided by all sum of all resistance, that is equal to 13. Similarly, for this resistance, 4 times 2 is equal to 8, divided by sum of all resistance, that is equal to 13. Okay. अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये सर्किट बन जाता है, इस तरह का सर्किट हमारे पास बन गया. अब हमने क्या करना है, 3 प्लस ये दोनों सीरीज में आते हैं, तो फिर इसके साथ आप 3 को ऐड कर लो. ये दोनों सीरीज में आते हैं तो इसके साथ फिर 6 को आप ऐड कर लो. अच्छा, now this resistance is in parallel with this resistance, तो इनका पैरेलल फाइंड करना है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट. तो इससे क्या आ जाएगा, 14 डिवाइड बाय 13 प्लस 36 डिवाइड बाय 13 हो जाएगा. नो, 39 डिवाइड बाय 13 हो जाएगा. तो इससे क्या आ जाएगा, 9 10 11 12 13 1 3 4 5 53 डिवाइड बाय 13 हो जाएगा. यहाँ से क्या आ जाएगा, this will become 28 divided by 30 plus 78 divided by 13 हो जाएगा. So 16 1 carry 7 8 9 10, so 106 divided by 13 इससे आ जाएगा. अब ये दोनों इक्वलेंट, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को 53 divided by 13 times 106 divided by 13 divided by addition of these two, तो इसको ऐड कर लो, 6 7 8 9 5 159 आ जाएगा divided by 13. okay, so this 13 will cancel by this 13. अब यहाँ पे हमारे पास इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर 53 टाइम्स 106, इससे आपके पास आ जाएगा 5618 divided by 159 times 13, 159 times 13
सो इससे हमारे पास आ जाएगा 2067 सो 5618 डिवाइड बाय 2067 दैट्स विल इक्वल टू 2.7 इससे हमारे पास आ जाएगा 2.71 अच्छा अब दिस इज इन सीरीज विद दिस ओके 8 डिवाइड बाय 13 इससे क्या आता है 8 डिवाइड बाय 13 से हमारे पास आ जाता है 0.615 को आप ऐड कर लो 2.71 से तो आपके पास 3.3 आ जाएगा 3.3 तो इट मीन्स के ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर 10 डिवाइड बाय 3 is also equal to 3.3 okay next MCQ number 45 that is and similar resistor each of resistance R when connected in parallel have the total resistance R capital R when these resistance are connected in series the total resistance is तो हमारे पास n सिमिलर रेजिस्टेंस है ओके और ये पैरेलल में कनेक्ट हैं और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास R है तो अच्छा n similar resistance each of resistance R when connected in parallel have the total resistance so your total resistance will be equal to आप इसका it means that the equivalent resistance तो equivalent resistance means कि आपका ये क्या हो जाएगा R divided by N हो जाएगा ओके this will be the equivalent resistance अच्छा अब हमारे पास इफ यू कनेक्ट इट इन सीरीज तो आपका टोटल फिर क्या हो जाएगा फिर आपका हो जाएगा एन आर हो जाएगा एन स्मॉल आर नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर और हियर तो आपका ये आर टोटल क्या हो जाएगा एन दिस विल बिकम आर एंड दिस विल बिकम एन सो ये आपका आर टोटल क्या हो जाएगा दैट्स विल बिकम एन स्क्वायर आर ओके दिस इज फॉर सीरीज दिस इज फॉर sorry this is for parallel this is for series so this will be n square r okay option 3 will be the correct answer okay next I'm 14 Kirchhoff current law at a junction deal with conservation of energy conservation of momentum conservation of angular momentum conservation of charges करंट में हम चार्ज को ट्रीट करते हैं लाइक दैट्स इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस आएगा ओके दिस केवीएल में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास ऑप्शन 1 पर भी करेक्ट आंसर होगा इफ दिस इज केवीएल but this is current KCL so in this case option 4 will be the correct answer okay next MCQs is MCQ number 47 figure 2.35 show parts of the closed circuit what is the value of VA minus VB you need to find the value of VA minus VB so what we will do you will need to move like this तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इससे वोल्टेज सो दिस विल बिकम 4 वोल्ट ये आपका ड्रॉपिंग हो रहा है सो दिस विल बिकम नेगेटिव 3 sorry this is also dropping this is also dropping so this will become 3 plus यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 times 1 is 2 so 4 5 6 7 8 9 so 9 आ जाएगा option 2 will be the correct answer okay next MCQ number 48 Kirchhoff voltage law deal with the conservation of energy as I already discussed okay voltage में हम energy को encounter करते हैं like energy आपका same होगा MCQ number 49 that a wire of resistance 0.1 ohm per centimeter is meant to form a square ABCD of side 10 centimeter. A similar wire is connected between B and D to form the diagonal BD if a 2-volt battery of negligible internal resistance is connected between A and C then total power dissipated will be तो हमारे पास अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हमारे पास स्क्वायर है ओके सो ऑल साइड्स विल बी इक्वल टू ईच अदर ये भी 10 सेंटीमीटर होगा 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 एंड सिमिलर वायर इज कनेक्टेड बिटवीन B and D so let's suppose this is my A this is my B this is my C this is my D so similar wire is connected between B and D okay I connected if a 2-volt battery of negligible internal resistance is connected between A and C सो इसको मैं थोड़ा सा बाहर कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इससे सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ सो दिस इज माय 2-volt बैटरी विच इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड सी ओके दिस इज 2-volt बैटरी अच्छा between and C then the power dissipated so we need to find the power dissipated in this circuit that will be equal to so we know that P is equal to V square divided by R तो V is equal to 2 तो ये आपका हो जाएगा 4 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे फाइंड करने तो यहाँ पे आप देख लो तो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ ब्रिज सर्किट ओके यहाँ पे आपका दिस इज 10 सेंटीमीटर तो ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम यहाँ पे हो जाएगा सो लाइक 0.1 times 10 विल बी इक्वल टू 1 ओम ओके
अच्छा, तो ये भी 1 ओम हो गया, ये भी 1 ओम हो गया, यहाँ पे भी 1 ओम होगा। सो व्हेन करंट कम ओवर हियर, तो यहाँ पे करंट आपके इक्वल स्प्लिट होगा, क्योंकि दोनों साइड पे इक्वल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी करंट स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे भी करंट स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना ड्रॉप होगा सेम ड्रॉप आपके यहाँ पे होगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल रिमेन सेम पोटेंशियल एज द पोटेंशियल ओवर हियर। तो जब सेम पोटेंशियल होगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे इस यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इट मीन्स दैट इन दिस सेक्शन द करंट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब ब्रिज में हम कौन से लाइक दिस विल एक्ट एज ए मिडल। ओके, लाइक इसके क्रॉस, इस ब्रिज के क्रॉस आपने जो रेजिस्टेंस लेने हैं, लाइक आपने वो फार्मूला जो है ब्रिज का वो यहाँ पे अप्लाई करना है। वो फार्मूला क्या था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ऑपोजिट रेजिस्टेंस, so multiplication of two opposite resistance will be equal to these two resistance। ओके, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, तो इसको आपने काउंटर नहीं करना, बस आपने इन दोनों को लेना है। तो ये दोनों आप like this satisfying this bridge circuit। Okay, so it means that this 1 ohm resistance is in series with this 1 ohm resistance, तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 ohm resistance is in series with this 1 ohm resistance, तो वो भी 2 हो जाएगा। तो दोनों आपका पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल में फाइंड कर लो, तो इससे आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, दैट्स विल बी टू 1। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 1 ohm आ रहा है, तो दिस विल बी टू 4 डिवाइड बाई 1। तो इट मीन्स के 4, option 3C will be the correct answer। Okay, next MCQs is MCQs number 50, which is the last MCQs of this class. That is, a cell supplies a current of 0.9 ampere through 2 ohm external resistance and 0.3 ampere through 7 ohm external resistance। The internal resistance of the cell is, okay, हमारे पास एक सेल है, okay, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, okay, R, और यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम 0.9। ओके, यहाँ पे हमें वो गिवन नहीं है। 0.9 एम्पियर थ्रू ए 2 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड 0.3 एम्पियर 0.3 एम्पियर थ्रू 7 ओम resistance, external resistance। The internal resistance of this cell, so you need to find the internal resistance also। So it means that my E will be equal to 0.9 R हो जाएगा प्लस 0.972 हो जाएगा, सॉरी। सो E will be equal to 0.9 R। सो अब सेम हमने उसके लिए भी करना है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट्स E will be equal to 0.3 R प्लस 2.1 ओम हो जाएगा। ओके, तो 0.3 times 7 will equal to 2.1 ohm। अच्छा, so now you will need to find the internal resistance। okay, so इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, इस वैल्यू को E को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 0.3 R हो जाएगा एंड 2.1 कैपिटल R हो जाएगा, दैट्स 2.1 ओम हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 0.9 स्मॉल r प्लस 1.8 हो जाएगा। तो इसको आप उस साइड पे ले जाओ, तो इससे अब हमारे पास आ जाएगा 0.6 स्मॉल r, और उसको इस साइड पे ले आओ तो 2.1 माइनस 1.8, तो 0.6 स्मॉल r विल बी इक्वल टू, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। ओके, तो योर r will be equal to 0.3 divided by 0.6, which is equal to 0.5। So in this case, option 1 will be the correct answer। Okay, so this is the end of this video। If you have any confusion, then please put that confusion in the comment section। Thanks for watching। Allah Hafiz।